on the lines of IIM with active support and help from Government of Bihar to resurrect the educational glory of Bihar. Recently, CIMP has secured position in the top 125 management institution in the country under the NIRF ranking 2022 conducted by Ministry of Education, Government of India. Now, let me introduce our chief guest of the day, Mr. Praveer Kumar, Operations Director, Vodafone India Limited. Sir has proven track record of leading startups and turns around non-profitable operations. I would also like to welcome Professor Dr. Rana Singh, Director CIMP, and Shri Kumud Kumarji, CEO CIMP. Now, I request Professor Dr. Rana Singh to present sapling to Mr. Praveer Kumar. Now, may I invite our honorable guest, Mr. Praveer Kumar, to deliver his address. Sir, please enlighten us with your knowledge and experience. Shall I come like that? So, no presentation to sir. 2 मिनट तक दे देंगे आपको मैं. हाँ बिल्कुल. Sorry. I think our colleagues. So it's indeed a pleasure, privilege, honor and delight to have with us Shri Praveer Kumarji. And he's a man of eminence, brilliance, experience and competence optimally blended together into one. And he comes from the heartland of Bihar and Patna together. Prior to this, he was heading Bihar and Jharkhand with Reliance Jio, and he's one of the most coveted corporate directors today, who's being paid in crores. I'll not quote the exact numbers because we have some agreement of non-disclosure. So, but all that we wish to tell that we need to understand what are the key focus areas of excelling par excellence in the corporate world. And we have two domain experts, people coming from academics who give you the basic inputs pertaining to the theoretical underpinnings of the subject, and we make it imperative on our part to invite some of the most coveted achievers who have excelled par excellence in the corporate world and have set benchmarks of excellence on the sands of time, which are indelible footprints, which becomes a source of inspiration for the generations to come. And the practitioners are the ones who tell what are the pains, challenges, opportunities, and the overall experiences for others to learn. And telecom sector is one of the fastest growing areas in a developing economy like India, which has been performing par excellence, and they have multiple challenges including acquiring new customers, retaining the existing customers, improving customer relationship, managing the overall quality of services being delivered, improving networks, and there are a large number of factors and dimensions to make sure that they are able to maintain and sustain the hegemony in the corporate world. So I once again take this opportunity to extend a very warm welcome to Praveer ji, who has been an indispensable part of the success story of CIMP. We invite him with a big round of applause. They were so eager to listen to you, they even ditched my invitation for welcoming you. If we can remove this, I mean, this is not required. We will remove this, sir, with your kind We permission. can switch it off. Yeah. Yes, thank you. They were so eager to listen to you, they even skipped my, opportunity to welcome you. So, very good morning, students. Morning, sir. So I must thank Professor Rana for all his
kind words for me. And he is also an example. So you people are still studying in a college which is far better than from where he has studied. So I mean, where he is working, I mean, as a director. So Ellen Mishra College. So he is one of the exemplary example of alumni of that college. So normally if you go and meet Ellen Mishra College of a student, so their communication skill is especially in the part of the language which he was using while addressing all of us is very weak. So the way he has picked up and the way he has grown and has reached here, so he is also an example. So why I have quoted this example? Because if you want to do something from where you have studied and what you have studied doesn't matter. Right? So there are multiple examples in world. So today's 1 hour, I'm not going to tell you that what to do, what not to do. I will try to keep it as an interactive session where we all will talk. Right? So the name of this session was Leadership Talk. So let's talk. And if you will talk, you will gain more. So Sundar Pichai studied metallurgical engineering, and he becomes he has not studied computer science. He has not studied even electronics and communication. So what you have studied and from where you have studied, it takes a back seat once you have that zeal and passion to achieve something in life. Right? So अभी मैं इनसे मिला था अभी जब मैं कुबूत जी के साथ बैठा था तो he was talking to me in a Hindi which only रामधारी सिंह दिनकर और मैथिली शरण गुप्त कहते हैं। आप मतलब दोनों भाषाओं पे आपकी भी जबरदस्त पकड़ कैसे है? तो so there are many examples. So if I will give you my example, then I have even studied in a college which is even little lesser than a downgraded college than his college, Ellen Mishra Patna. I studied from Ellen Mishra Muzaffarpur. And that too, my education was a part-time course, not a full-time course. I am a history graduate. Till graduation, I have not studied any book in English. I have not written any examination in English. First time in my life, I studied a book in English when I was doing my MBA, that too a part-time. I was working with Asian Paints. So, from there we have started our journey. So my school was Village School Muzaffarpur. Who is from outside Bihar? Bihar se bahar se kaun? Anyone out from outside Bihar? So my college name is Langat Singh College. NS College, right? So full name is Langat Singh College. So when I interacted with my colleagues, like when I was working as a chief operating officer with Tata Teleservices up to 2039 to 30. My all colleagues were like, we were 16 CEOs, so all, barring me, all 15 were from the premium institute. So if not, I am that at least FMS or XLRI type of, and 5 of them were IIT plus this institution. So they used to ask me from which college you studied. I used to say Langat Singh College. So they were so surprised. So what is this Langat? What is this Langat Singh? So why I am saying so? That when you will pass out from this college, the only benefit you will get in your life because of the certificate of the college, the only benefit in your entire life, when you will be getting your first job through your campus recruitment. After then, from where you have studied doesn't matter at all. Why this doesn't matter? पहली नौकरी के बाद दूसरी नौकरी के लिए या उस पहली नौकरी में भी 6 महीने के बाद, whether you are IIT IIM or whether you are Ellen Mishra College or Business Management or CIMP or any college for that matter. Why this doesn't matter? After you are joining, first 6 months, that's all. If you are into private sector,
If you are into government sector, I can't comment. But if you are in private sector, corporate sector, then this doesn't matter for entire life. कोई बताओ? तुम इसे कौन सबसे तुम्हारे हिसाब से बच्चों? हाँ बताओ. So because after the 6 months, it's only matter that what experience you follow and what things you think that are you able to think out of the box or not. Very good. So तुम लोगों के हिसाब से इसमें सबसे तेज बच्चा कौन है? कोई बताओ? आशुतोष कौन है? तुम हो आशुतोष? चलो तो हमारा नेता कैसा हो आशुतोष भाई जैसा? करे बताओ. आशुतोष क्या लगता है तुम्हें? चलो बैठ के बताओ, हम आराम से बात करते हैं. Well, mainly is what experience we get, like what we learn from the practical world and how we are going to impose our learnings onto the practical world. Very good. So let me tell you, my dear students, when you get into corporate sector, you are working with a businessman. Be clear about it. So what Asutosh said, your experience, your knowledge, everything should translate into money and revenue for the businessman for whom you are working. You studied from IIT IIM or you studied for CIMP. आप अपने promoter को, who has invested, so what value you are adding to your shareholders, that is what matters for an employee. Right? So how this revenue will get added? How this money will get added? Every company is driven by a promoter. That you understand? इस बार का सारा सेशन Who is the promoter? और वो सबको चला गया. What promoter means? The person who has invested money in that company. He is the promoter of that company. Right? पहले ही शेड्यूल बनकर What the promoter will want? उसको चला जाता है. The promoter will want the best ROI on his money, return on investment on his money. Correct? Whom he will love? करेंगे. Who will give him the best ROI on his money. उसे कोई नॉलेज का अचार नहीं डालना है, उस डिग्री और सर्टिफिकेट में. देखा अच्छा है. तो जब आप इस कैंपस से बाहर निकलेंगे, हाँ, तो आपको पहली जॉब हमारे कैंपस की वजह से हो सकता है मिल जाएगी, या वैसे किसी भी अच्छे इंस्टीट्यूशन, ये भी बहुत अच्छा इंस्टीट्यूशन, यहाँ पे 100% प्लेसमेंट होता है, आपको भी नौकरी मिल जाएगी. है ना. पर आपने जब हम आप तो फिर आपको दूसरी 10 जगह बोलने की आवश्यकता क्या है ना. ये क्लियर समझा तुम लोगों ने ना? एकदम गलत फहमी निकाल देना अपने दिमाग से कि तुमने अगर CIMP से किसी इंफीरियर कॉलेज से पढ़ाई की होती या CIMP से किसी सुपीरियर कॉलेज से पढ़ाई होती, बस तुम्हारी स्टार्टिंग सैलरी का फर्क होता है और स्टार्टिंग कंपनी का फर्क है. That is all. Post that, the only things matter how valuable you are for adding value to your organization. When I am saying adding value, it's 100% in monetary terms. You may meet some English HR person who will give you all jargons of the word. HR values, HR ethics, HR practices. But those all values, ethics and practices should be converting into some value for the stakeholder or the shareholder. Or else that those value doesn't matter, of no use. So why they keep these HR values and everything? Because if you see in practical terms, this will engage the employees, right? When this will engage the employees, what will happen? Employee will be more productive. Attrition will be less, retention will be more. So अभी एक आदमी है, आप एक कंपनी ज्वाइन करती हैं, आपने 6 महीने में छोड़ दिया, आपको लाने का, आपको ऑनबोर्ड करने का, आपको ट्रेन करने का जो टाइम और मनी स्पेंड है, वो तो लॉस हो गया ना. So this all HR practices and everything are finally aimed to add value to the organization or to stop leakage of
value from the organization. और एक तो ये मैंने आपको पहली बात जो आज का पहला लेसन है वो यही है, आपने किस कॉलेज से पढ़ाई की है, जो भी पढ़ाई की है उसकी वैल्यू पहली नौकरी पाने और उसके बाद के 6 महीने में, समझ गए भाई? क्योंकि 6 महीने तक इसलिए है कि वो 6 महीने आपको बर्दाश्त करेगा, पर 6 महीने के बाद वो बर्दाश्त नहीं करेगा। वो 6 महीने इसलिए बर्दाश्त करेगा कि बच्चा है, अभी कैंपस से निकल के आया है, अभी इसको थोड़ा सिखाते हैं, या 6 महीने नहीं, चलो 1 साल पकड़ लो। एज ए मैनेजमेंट ट्रेनिंग वी कीप trainees for any year or so. So 1 year is your training time, learning time, everything. But post 1 year, that salary which you will be getting should give more dividend to the promoter as shareholder than what they are paying to you. If it is not, then nothing will happen. So this is why I am telling you, because when I interact with in my present company with board member and all, so I see, I mean, if we are spending, so there is a cost which we say, Sir, what is the honeymoon period in telecom sector? honeymoon period sir, टेलीकॉम में भाई मतलब जो मैनेजमेंट ट्रेनिंग आते हैं 1 साल तक ज्यादा 1 साल, उसके बाद, और जो एक्सपीरियंस लोग आते हैं उनके लिए 2-3 महीने, 2-3 महीने में फिर आप No, I want you to let them know कितने समय तक मतलब थोड़ा काम पर करके रखा जाता है. In your first company where you will join as a management trainee, so they will bardast you for an year, and post that, so when I interact with, like I had a tough time last month, so we have a cost called, we call it COCA, which is cost of customer acquisition. So we were spending around 1200 crores of COCA per month, right? So we had a presentation in front of the board. So board is not, board में जो लोग होते हैं, they are not the employees of your organization. They are the people nominated by the promoters or the expert of that industry who sits in that board, so that they can have control and check and balances in what we are doing. तो उन्होंने बोला कि ये 1200 करोड़ रुपए आप खर्च करते हैं, ये 1200 करोड़ खर्च करके हमें रिटर्न क्या मिलता है महीने का? So the company where I am working, we have not been able to show them that by spending 1200 crores, what return we are getting. So our that cost has been cut by board by 300 crore rupees. We cannot spend in that particular head more than 900 crore rupees, because we have not been able to prove to the board that what return the organization will get. Organization means shareholder. एक कंपनी में जो मालिक होता है वो शेयर होल्डर होता है, जिसका उस कंपनी में शेयर, तो शेयर होल्डर्स के नॉमिनेटेड लोग उधर होते हैं, वो चेक, वो कीप चेक ऑन फॉर द मनी व्हिच हैज बीन इन्वेस्टेड. तो आर that cost has been cut to by 300 crore rupees, because we have not been able to prove. So see, I mean, this at this stage you will come in latter part of your career, but initially you should understand the first thing which I said, and second thing I spoke, which is most important for you all to understand, if you really want to succeed in your professional life, that your bosses, thing which I was telling you about the promoters and shareholders, there you will reach in quite latter part of your career. But the immediate bosses, they will want performance. Only and only performance. And the boss who doesn't want performance never work under him, because he will spoil your career. अभी वो परफॉर्मेंस जिसको नहीं चाहिए, जिस बॉस के नीचे अगर आप काम करेंगे, तो वो आपको आपके काम के अलावा कुछ और करवाएगा, कुछ अपना पर्सनल काम भी करवाएगा, कुछ ऐसा काम करवाएगा, उस चक्कर में क्या होगा, योर वैल्यू एडिशन विल गेट स्टॉप्ड, योर ग्रूमिंग विल बी स्टॉप्ड. पर अगर वो आपको प्रेशर देके काम करवाएगा, जितना प्रेशर देगा आप अपने इनिशियल पार्ट ऑफ करियर में उतना निखर के आओ. अगर ऐसे बॉस के अंडर में काम किया जो बहुत प्यार करता है,
बहुत केयर करता है, ज्यादा डांटता नहीं है, फटकारता नहीं है, योर करियर विल बी स्पॉइल्ड। तो नेवर गेट इनटू दिस। इस गलत फहमी में वो कभी मत, वो अच्छा इंसान हो सकता है, वो अच्छा बॉस नहीं हो सकता, राइट? नॉर्मली बच्चों को लगता है जब वो पहली दूसरी कंपनी जाती, बड़ा मिला, आपस में बात करते, मेरा बॉस तो डांटता भी नहीं है, मेरा बॉस बहुत प्यार से बात करता है, जब छुट्टी मांगता हो दे देता है, कोई दिक्कत नहीं होती है, मैं बहुत खुश हूँ। आप खुश हो फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, एंड सो अवॉइड दिस टाइप ऑफ लीडर्स। they will not make you learn, they will not groom you, right? अब इसके बाद जो चीज इंपॉर्टेंट है, मैं सिर्फ आपको वही चीजें बता रहा हूँ जो आपको आपके कोर्स बुक में या गूगल पे नहीं मिलेगा। वो बाकी तो आप सब तेज बच्चे हो, पढ़ लोगे, निकाल लोगे। यहाँ तक किसी को कुछ समझना है तो पूछो, then we will move forward. Can we say about the conclusion that whatever you till now, the performance and profit is above the ethics? Performance, and this is not written in any books, nor can be written, but actually this is what happens, right? So there are many ethical companies of the world who become bankrupt. So organization is not a charity organization. Every organization has only one religion, that is to earn profit, right? And give a better return to the people who have invested in it. This is the first reason. So the question which you have asked, इसने अच्छे सवाल पूछा कि सर ethics पहले है या profitability पहले है? मैंने बोला हर कंपनी के रूल ऑफ बुक्स में लिखा हुआ ethics पहले है, लेकिन ऐसा होता नहीं, right? So you know what is happening. This is very interesting, Rana sir. All European companies who believed in 5 days working and 4 days working, they are all getting, like, they all are shattered today. They are struggling for existence. So it looks good. And European companies have always kept ethics and values over and above anything else. सर इनको मत कि इनका डायरेक्टर संडे को भी घूम रहा होता, आधे इवेंट्स तो संडे और सैटरडे को ही कर रहा है। So you know why this has happened. I mean, this is very interesting, and you should, if you are chasing the changes which is happening in the corporate world across the globe, barring few exceptions. So exceptions cannot decide the rule. The companies which are led by promoters are growing better than the company led by professionals. In India, you see the best company or the biggest companies are Ambani's and Adani's. आप उनको जितना भी गाली दे लो कि they are unethical, they are this, they are that, but very soon, in this decade only, they will be controlling, this is my guess, I may be wrong, 1/4 of your GDP they will be controlling. Most unethical, they can do anything to get the job done. Third largest company in India, which is a 5 lakh crore company, is ABG Group, Aditya Birla Group. Very ethical company, but led by Kumar Mangalam Birla. He is personally involved in everything. Airtel is a professionally managed company, or Kumar Mangalam Birla, Aditya Birla Group is a professionally managed company. Tata Group is a professionally managed company, but again, ये सिर्फ कहने के लिए है. Ratan Tata has full control as a promoter over that company. Sunil Bharti Mittal is involved day to day, and Kumar Mangalam Birla is involved day to day. Even both Rakesh also, SBM, RBM together. Correct. Rajan Mittal and Rakesh Bhatt. Rakesh Mittal. So, you see the growth of these promoter-led companies. You see growth of Google is one exception. Otherwise, what is Facebook and Twitter again?
promoter-led company. Promoter is fully involved. So this is how the world is changing. And all European companies, Vodafone is a European company, now actually struggling in Europe. Nokia, and you see the Japanese and Korean companies, how they are growing. So अभी तुम्हारा क्या नाम है? Amritansh. Amritansh. It's Amritansh. Amritansh. So coming back to the point which I was discussing with you, that the most important thing which will be seen in you while you will be traveling ahead in your career is your confidence. ये बच्चा तुम सोया नहीं रात को क्या? No, say yes. You have slept. So the thing which will be seen in you is the confidence which you have, first and foremost, the ideas which you have, and confidence and ideas have no language. You show your confidence in Hindi or Tamil or English, doesn't matter. You present your idea in any of the language, that idea should be useful. English is one language which has largely been accepted in corporate houses or corporate industry as a mode of communication, right? But if you have ideas, if you want to share something which is useful for the organization, doesn't matter. All that matters is how much confident you are and how much powerful your idea is. So कभी भी कोई ऐसी चीज हो तो बोलने में झिझकना मत. जिस लैंग्वेज में बोल सकते हो कोई फर्क नहीं. अगर तुम्हारे आइडिया में दम है तो वो इक्वली रिकॉग्नाइज किया जाएगा, है ना? तो अमृतांशु, so like what I have realized कि this part is little weak, right? So it doesn't matter. If you want to communicate yourself and you have something powerful to present, you present in the mode or the medium which you got, and in the meantime if you want to recover, you want to improve on your this part of language, then you must work on that and you improve. So अभी तक हम लोगों ने दो बातें की. अब इन दो बातों में अभी किसने क्या समझा अभी मैं पूछूंगा, और आप तो कहाँ से पूछना शुरू करो बताओ. तुम लिख भी रहे हो तो अच्छे बच्चे क्या नाम है? नहीं ये अच्छा लड़का लग रहा है मुझे, लिख रहा है सब कुछ, मैं बोल रहा हूँ. Sir, in first part you said that. नहीं, what I said I know. I am saying कि what you have understood that I want to. So I understand that college doesn't matter. First of all, from where you study, hardly it matter for 6 months. After that, your knowledge and strengths matter. Where you go, you will perform you better, and which is positive for our organization as well. That's the whole thing, sir. Negative of the point. तो और इस पहले पॉइंट पे जो इसने क्या नाम है तुम्हारा? Amandeep, sir. अमनदीप ने जो बोला, और कोई बोलना चाहता है? Yes, sir. हाँ बोलो. Sir, it matters that after 1 year or after 6 months, it matters what you are being paid by the company or organization. It's being profitable or dividends are being given or profitable to the shareholders or the company holders of the organization. चलो बोलो. Anyone else? हाँ जी बोलो तुम. Sir, it really doesn't matter from where we come. Like, if we are working in a corporate, what the shareholders or promoter wants is how much value we are adding to the profitability of that organization in terms of in monetary terms. Correct. So, Zeen and enthusiasm to work for the market and it matters from where you are coming. Sir, you also said that if your boss is not scolding you or yelling at you, then you might. स्कोल्डिंग मैंने बोला कि बहुत प्यार वाला है, तो प्यार में आप प्यार ही पाते रह जाओगे, बाकी चीज आपकी मिस हो जाएगी. Mama, they are getting booster doses also. Here they are getting. So in career sometimes people One day, 30 mistake. of them got a booster dose who were found missing from international conference. 30 of them got booster dose. So now they are very alert and conscious and cautious. This is a very powerful batch. Yes.
हाँ तुम कुछ कह रहे हो। about the boss. चल तो मैंने 3 बातें कही। हाँ, पहली बात मैंने कही, अब मैं इसको बिल्कुल आपको एकदम देशी और रॉ भाषा में समझा रहा हूँ। आफ्टर योर फर्स्ट जॉब which you will get through campus, you will be tolerated for maximum a year till the time you are a management trainee. Tolerated in terms of how useful and how you are contributing to the organization in terms of profitability. Correct? सीधा सीधा है, अगर आप इसको हिंदी में समझें, आप उस कंपनी के लिए कितने काम के हैं, सिर्फ और सिर्फ ये देखा जाता है किसी इंसान के करियर में उसके ग्रो करने के लिए। अगर आप उसके काम के हैं तो आप ग्रो करिएगा, आप काम के नहीं हैं तो शायद आप एक मीडियोकर बन के थोड़े समय तक नौकरी कर लीजिएगा, 10 साल 15 साल, और उसके बाद क्या होता है लाइफ में, करियर में, कि दिस इज अ मस्ट दैट यू शुड ग्रो विद एज। सो इफ यू आर 40 years old and still you are in frontline sales, someday that company will drop you and no other company will pick you, because in frontline sales the age bucket is 25 to 30 years. Since you worked in an organization which was a comfortable organization for you, you have not taken risk in your life and you have gone into your comfort zone, so then a time came when neither that company will keep you, nor any other company will pick you. So you should keep growing in your career according to your age. So or else, so this growth, अभी इसको हम लोग और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं डिस्कशन। तो मेरे आने का पर्पस क्या है कि मैं आपको कुछ ऐसा बता सकूं कि जब आप इस कॉलेज के बाहर निकले तो आप बेहतर तरीके से ग्रो कर पाए अपने लाइफ में। तो उसके लिए ये बहुत जरूरी है जो मैंने आपको बताया कि आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस हो। तो जो मैंने पहला पॉइंट बताया था, मैं कोई स्ट्रक्चर डिस्कशन करने के लिए नहीं आया था, मैंने अभी कुमुद जी से बात की तो मुझे लगा कि बच्चों को कैसे वैल्यू ऐड किया जाए। तो जो मैंने पहला पॉइंट बताया आपको और जो एक और 2 पॉइंट बताए, वो सिर्फ इसलिए बताया कि आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस इन्फ्यूज कर पाऊँ कि आप किस कॉलेज से पढ़े हैं, आपका किसी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज पे कितना कंट्रोल है, ये कोई मायने नहीं रखता है। तो अगर ये पार्ट आपका वीक है तो आप इस पे साइमल्टेनियसली काम करके इंप्रूव करो, लेकिन अगर ये पार्ट वीक भी है, आपको रोक नहीं सकता है। दिस कैन नेवर स्टॉप योर जर्नी एंड दिस कैन नेवर स्टॉप योर जर्नी। तो ये पॉइंट मैंने सिर्फ और सिर्फ आपके उस कॉन्फिडेंस के लिए बताया। जो दूसरी बातें मैंने आपको बताई है कि आप इस कॉलेज से निकलने के बाद आपके बहुत सारे कोलीग होंगे, आज से 10 साल के बाद आप जब देखेंगी कि आप कहीं और निकल गए, वो पीछे छूट गए, आप पीछे छूट गए, वो आगे निकल गए। ये सबके साथ होता है। ये क्यों होता है कि 4 दोस्त एक हॉस्टल में एक कमरे में रहते हैं, उसमें से कोई सुंदर पिचाई हो जाता है और कोई सुंदर पिचाई से नौकरी मांगने वाला हो जाता है कि भाई मेरे पास जॉब नहीं है, मेरे लिए कुछ कर दो। So what is the reason? What differentiate between a successful professional and a non-successful professional? What will pull you up? What will pull you down? I will push you up and what will pull you down? So these are very basic things which I have shared with you, my experience. So first part you simply now forget. I just told you because of the confidence, because I have seen in many colleges, I go to IIT Kanpur, Kharagpur also for my lectures. So there I have seen कि those people, वहाँ मैं उल्टा बोलता हूँ। वहाँ पे कई बार देखा मैंने, एक कॉलेज है IIT खड़गपुर के कैंपस में, विनोद गुप्ता स्कूल ऑफ मैनेजमेंट। तो वहाँ के एक बच्चे को देखा, जैसे वो ओवर कॉन्फिडेंट था, उसे लगा कि वो मतलब हार्वर्ड से ही पढ़ रहा है। अभी इधर हम पढ़ रहे हैं तो मेरा तो अभी IIT खड़गपुर से पढ़ रहे हैं, कुछ भी करते। तो मैंने उसको उल्टा बोला था कि आप किस कॉलेज से पढ़ते हो ना, ये भी उस पे अप्लाई करता था। वो 6 महीने साल भर तक ही चालू रहेगा।
we are, I mean, any professionals, if I'm handling, I'm running a company in this country, so I am not here for any social service. I am answerable to my board of directors who has cut my 300 crore rupees because my team has not been able to give proper return on that. So any organization is not a charitable social organization that we are here to help someone grow his career or to groom him in his career. We are not for that. So that was for that purpose, just to infuse that confidence in you. But what makes successful and not successful, उसमें पहला मंत्र आप ये ले लीजिए और इसको आप सब लिख लीजिए, अगर दिमाग में लिखना हो या कागज पे लिखना हो. That keep growing in your career with your age, or else you will be finished by a time. ये कंपनी में ग्रोथ मिले, दुनिया की किसी कंपनी में ग्रोथ मिले, गलती से भी अपनी प्रेजेंट ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ इसलिए मत रह जाना कि इधर मेरा कंफर्ट है. वो कंफर्ट भी उस ऑर्गेनाइजेशन में बियॉन्ड अ टाइम नहीं रहेगा. दैट ऑर्गेनाइजेशन विल ऑल्सो नॉट एक्सेप्ट यू इफ यू विल नॉट बी एबल टू ग्रो विथ योर एज. सो दिस इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट. मैंने हमेशा जिंदगी में यही किया था. I have decided that yes, by this year of my age, I should be handling this role and should be in this position. This company or whichever company of this world will give me this opportunity, I will go. हाँ जी सर. आप जो कह रहे हैं सर, उसी से मिलता जुलता एक वाकया जस्ट हाँ, शेयर. A young professional from Patna who was heading the Adani Group's cement venture. He was getting around 11 crores as CMD. He moved to Shri Cement at 33 crores package. Neeraj Akhwari. Ah? Neeraj Akhwari, yes. Yeah. Big name. And But he is no more young. Huh? But he is no more young. I still call him young. Because in US people start taking serious decisions of life at 50, so he's still young. But imagine a whopping 33 crores and he's from Patna itself. So I really keep track of all the brilliant minds from Patna, so I just got a call from his brother-in-law. So मैं चाह रहा था कि एक दिन कौन वो उसका brother-in-law? अमिताभ अखवारी? नहीं, वो तो शायद वो साधु हैं. हाँ, साधु है. हाँ, वो the entire family बेटे की शादी कर रहे हैं वहाँ से जयपुर से. So what exactly is the learning lesson? From 13 crores package to 33 crores package, and they have offered for 10 years कि अब और कुछ मत सोचिए इसके. Look after even Dubai operations, India operations and so on. So what you are saying is exactly correct. If you are doing good, you are getting. So normally what happens, what Professor Rana said, that ये जो दो गलती लोग करते हैं ना, वो जिंदगी भर फंसते हैं. और जो ये दो गलती नहीं करते वो ग्रो कर जाते हैं. And these two things should be supported by few things which I share with you. So first thing which I told you, that एक अपना बना लो. You must write it down on a piece of paper for yourself, your career plan. See in good organization at what level people of what age are sitting. So if managerial level is up to 30 years, and 30 to 35 you should be a DGM, 35 to 40 you should be a GM or a VP, and 40 and above you should be sitting at senior VP or executive president or president. So this is, if this is the journey of a professional, and you just imagine you become 40 and you are still a manager, what will happen to you? In all good companies, so every organization when they recruit people, their HR have a age bucket and a salary bucket. है ना? तो अब इसमें क्या होता है कि they need a general manager aged between 38 to 42 years of age and salary between 40 to 50 lakh. You are a very talented person, but
you are a manager and your salary is 20 lakh. Their minimum salary is 40, maximum is 50. In salary bucket you will get removed. No organization can give you 20 to 40. Normal increment, what an organization can offer you 25 to 50% in the best case scenario. Again, don't go for exceptions. What Neeraj Jokhari got. So he earned that value in his life. That is why he got that. So तो आप उधर छट जाओगे. तो ये कितना इम्पोर्टेंट आप समझो. आप उस नौकरी का जो रिक्रूटमेंट क्राइटेरिया है, that the person should be aged between this year to this year, experience this year to this year, and salary minimum this to maximum this. अभी क्या होता है, जो बच्चे हैं हम लोग के अभी बहुत सारे, वो इन तीन चीजों का ध्यान नहीं रखते. और अब इन तीन चीजों का जो मैंने इनको बताया, जिस नीरज जोखरी का इन्होंने बताया भी नाम, who was heading ACC Cement, and now he has gone to Sri Cement. His own brother-in-law, co-brother, whose name I just told, he was heading a cement company, but he has not been able to help his co-brother. Because his co-brother was in the age group of 50 plus, but is still at senior manager. So even if someone wants to help you and support you because you are a talented person, he will not be able to help you if you are not fitting in these three things. That is why I note it down as the first lesson of this meeting, that you must grow with your age, your salary must grow with your age, and your designation, your role and responsibility must grow with your age, or you will be left out in your career. ये एकदम क्लियर है? Yes, sir. आप सब ये बनाइएगा इस कैंपस से निकलने के पहले कि मुझे अपने एज के किस पड़ाव तक कौन सी जिम्मेदारी तक पहुंचना है. उस जिम्मेदारी तक पहुंचने के लिए मुझे जिस कंपनी में हूं वो कंपनी या दुनिया की जो कंपनी मौका देगी मैं उधर जाऊंगा, पर मैं उस चीज में पीछे नहीं रहूंगा. नाउ द मिस्टेक व्हाट वी डू, फॉर एग्जांपल लाइक व्हाट इज योर नेम? व्हाट? स्वीकृति. स्वीकृति तुम कहां से बिलोंग करती हो? पटना से. अभी स्वीकृति का क्या है कि स्वीकृति गॉट अ जॉब इन HDFC बैंक फॉर एग्जांपल. शी बिलोंग टू पटना. Her office is very close by to her residence. After few years she got married, and then her husband and her family is also in Patna. She is enjoying her family life. She is enjoying her career also, because in-laws are in Patna, family is in Patna, job is in Patna. But after 10 years of her career, what Swikriti will find, all her colleagues have now reached to the level of her bosses. After another 5 years, when she will reach her 45 or so, her bosses will start saying, yeah, this Swikriti is like, we should find someone, some young for this position. I mean, all her colleagues are so young at this position. So then what will happen? I'm telling you something which is very practical. Since Swikriti worked in that particular location and bank for 15 long years, Swikriti will be asked, Swikriti, we have a very good position in Calcutta, Odisha, Kerala, Tamil Nadu, because we want to remove you. And we know you that if we want to remove you, you will never go out. So we will offer you a transfer, and then you will resign and go. This is what will happen to your career, right? So anyone, this is the biggest suicide someone does with his career, that they don't want to take a risk and they don't want to leave their comfort zone. Risk है, यार this company is very stable,
ये देखते हैं ना आप, दिस कंपनी इज वेरी स्टेबल, उधर ग्रोथ हो या नहीं हो, बट स्टेबिलिटी शुड बी सीन बाय पीपल हु आर अबव 50. Not a 25-year person who is still unmarried will see stability. If you see stability, better you try for a government job. Then don't look for a corporate job. थोड़ा सा सर ले ऑफ के बारे में भी बता दें कि नौकरी आज ही के शाम तक की पक्की होती है। वो तो मैंने बताया कि शुरू से ही कि आपको 3 महीने बर्दाश्त किया जाएगा अगर आपका सेकंड जॉब है। फर्स्ट जॉब में जब तक आप मैनेजमेंट ट्रेनिंग है बर्दाश्त किया जाएगा। And it happened at all levels. So मैंने बोला ये कंफर्ट जोन और नॉट टेकिंग रिस्क वो जिंदगी में कभी ग्रो नहीं करता। आई एम गिविंग यू माय एग्जांपल। आई वाज वर्किंग विद रिलायंस जियो। आई वाज द CEO ऑफ रिलायंस जियो at president level. Very stable company. ये कंपनी कभी बंद नहीं होगी। But I have joined a company as a director, which is a very unstable company. Every day there is a rumor that this company is getting closed. But still at 50 years of my age, I took this risk because I knew that even if I'll perform in Reliance, that performance will be credited to our honorable chairman, that this performance is coming out because of the huge investment made by Mr. Mukesh Ambani. This performance is investment driven and not human driven. You understand? So when your Malik or your promoter or your chairman is knowing this is coming out because of my money, why he will reward you? Or why he will get credit to you? But if in Vodafone, if I turn around the things, entire credit will come to me. And then I will get rewarded disproportionately. So when at this juncture of my age, I can take risk which is calculated in nature, because I know a large organization like Vodafone Idea, which has two strong promoters, Kumar Mangalam Birla of Idea and Vodafone of Vodafone International, cannot get closed overnight. So I have a window of 2 years at least. And if in these 2 years, if I will be able to turn around the company, तो जो ये नीरज अखौरी की तनख्वाह बोलो इससे ज्यादा मेरी हो जाएगी। तो ये क्या है कि ये आपको रिस्क लेना पड़ेगा। इन इनिशियल पार्ट ऑफ द करियर तो दिस इज अ मस्ट। कभी भी होम टाउन, बहुत अच्छा बॉस है, जिंदगी सुकून में है, ये कभी मत सोचो। ये सारी चीजें हैं जो इंसान को अपने मिड लाइफ में आके एक ऐसा करियर क्राइसिस देती हैं कि वो अपना सीवी लेके पूरी दुनिया में घूमता रहता है कि भाई मुझे हेल्प कर दो नौकरी के लिए। तो आप नौकरी देने वालों में रहना चाहते हो या नौकरी मांगने वालों में रहना चाहते हो, ये डिसाइड आपको करना। सेकेंड थिंग विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इज you must add value to yourself on a daily basis. अभी मैंने बोला कि ग्रो करना चाहिए, है ना? कोई ये सब डिग्री फिग्री सब ठीक है, शुरू में वो सब आपको समझाया कि आप कॉन्फिडेंट हो जाइए। लैंग्वेज कौन सी आती है मुझे, मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं है, राणा साहब जी करते हैं, ठीक है, पर मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ अंग्रेज कंपनी है, हम जिन लोगों को प्रेजेंट करते हैं उसमें आधे फिरंग रहते हैं। तो अब राणा साहब की अंग्रेजी बहुत अच्छी है, मेरी उतनी नहीं है, फिर भी काम चला लेता हूँ। तो आपका आइडिया क्या पावर क्या है वो इम्पोर्टेंट है। आप उस आइडिया को किस लैंग्वेज में प्रेजेंट करते हैं वो इम्पोर्टेंट है। सर 7 साल वहाँ अरबी भी बात करता था। आनाफी कुल्लू अरबी मालूम, इंतफी कुल्लू अरबी माफी मालूम। All of them, they are hardly able to speak in Arabic. 7 years with the Firang of UAE also. ये बहुमुखी नहीं, ये चहुमुखी प्रतिभा है। हम लोग तो बहु हो सकता है, बहु मतलब मल्टीपल इज लाइक हिंदी एंड इंग्लिश, ये चहुमुखी।
So, तो ये दूसरी चीज जो मैं आपको ये बता, पहली चीज मैंने आपको बताई, एकदम गांठ बांध लीजिए, दिमाग से निकाल दीजिए। ये समझ लीजिए कि ऑर्गेनाइजेशन को क्या चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन किन लोगों को पसंद करता है, पहले आपको ये बताया। कौन सी गलती मत कीजिएगा जो हर इंसान करता है और वो मिड लाइफ में जाके पछताता है। तो जो ये गलती नहीं करते हैं वो आगे निकल जाते हैं, वो नौकरी देने वाले बन जाते हैं अपने कोलीग्स को। आप 20 लोग यहाँ बैठे हो, आप में से हो सकता है 4-5 लोग मेरी बात को गांठ बांध के इस पे अमल कर लो तो आप आगे निकल जाओगे। बाकी जो 15 है वो आपको सीवी भेजेंगे। तो आप सीवी मंगवाना चाहते हो या सीवी भेजना चाहते हो, ये आपके ऊपर है। दूसरा मैंने बोला कि ये सब तो अपनी जगह पे मेरा एस्पिरेशन है कि मैं एज के साथ ग्रो करूं, पर कैसे करेंगे? आपके चाहत से कि मुझे इतने साल में यहाँ पहुंच जाना है, मैंने कागज पे लिख लिया इससे मैं पहुंच जाऊंगा, ऐसा तो होगा नहीं। You have made a career plan कि yes by 30 years of age I need to be a senior manager, 35 a DGM or GM, and by 40 I should be a vice president handling a function and a large function, a large department. So this is your career plan. But this career plan, whether this career plan will become true just because you have written that on your piece of paper and this is your wish, इसकी वजह से तो नहीं होगा ना। So ये तभी होगा जब आप अपनी हैबिट में ये लाएंगे कि मैं अपने दिन का 1-2 घंटा समय सिनेमा देखने, दोस्तों के साथ बात करने, एक एज में आने के बाद लोग चैटिंग वैटिंग भी ज्यादा करते हैं अपने दोस्तों के साथ, या रात को भी लेट तक बात करते हैं, वो सब कीजिए। वो सब दैट ऑल इज पार्ट ऑफ लाइफ, दैट गिव्स यू एनर्जी, positivity and everything. But give 1 hour of your day to learn something which can add value to that particular field in which you are working. अब वैल्यू ऐड करने के लिए भाई हम तो अभी अगर किताब पढ़ लें, मिस्टर नाटकिया, उनकी कौन सी बुक है सर जो अपने नाटकर्णी जिन्होंने ये अपना आधार वाला किया था? अच्छा, ये नंदन नीलकेनी, हाँ नीलकेनी, हाँ मेक इन इंडिया, ऐसे उनकी बड़ी अच्छी बुक थी। अब वो पढ़ के अब आप काम कर रहे हो, मान लो आप में से कोई नहीं हो लेकिन कोई अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, उसे एक ऐप डिजाइन करना है और नंदन नीलकर्णी की किताब पढ़ के उससे वैल्यू ऐड हो रहा है। लेकिन वो आप जिस फील्ड में हो उस फील्ड से रिलेटेड आपको वैल्यू ऐड करने के लिए अपने दिन का 1 घंटा देना चाहिए। जो सब करते हैं वही आप भी करोगे तो आप भी वही पाओगे जो सब पाते हैं। आपको कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में आगे तभी बढ़ाएगी जो सब कंट्रीब्यूट करते हैं उससे ज्यादा आप कंट्रीब्यूट करोगे। आइडियाज फॉर द न्यू सेंचुरी था सर एक उनका, आइडियाज फॉर द न्यू सेंचुरी। करेक्ट। सो जो सब करते हैं वही आप भी कंट्रीब्यूट करोगे तो आप भी वही रिटर्न पाओगे। साल का 6-7% इंक्रीमेंट पाओगे, 5-7 साल नौकरी का 10 साल हो जाएगा तो एक प्रमोशन पाओगे, तो यही आप पाओगे। पर जो सब जितना कंट्रीब्यूट करते हैं उससे ज्यादा आप कंट्रीब्यूट करोगे तो बाकी से ज्यादा भी आप पाओगे, राइट? सो दिस, और ये आप कब कंट्रीब्यूट कर पाओगे? जब आपके अंदर कुछ वैसा होगा कंट्रीब्यूट करने लायक। वो कैसे आपके पास आएगा? जब आप समय दोगे उस चीज पे सोचने और पढ़ने की, राइट? सो crux is what he said, the way world is changing, whatever we have changed in last 4 years, we have not changed in last 40 years. Next 7 years, whatever we will change, we must not have seen that change in last 70 years. So this is how the world is going to change. Last 4 years का change आपको पता है? कोई बता सकता है लास्ट 4 इयर्स में इस देश ने क्या चेंज देखा है? वी आर ऑल डिजिटलाइज्ड। आज से 5 साल पहले आपने सोचा था कि सब्जी वाले को फोन पे से पैसा दे देंगे, मोबाइल से ऐसे निकालेंगे, ले बेटा तो उसने स्कैनर लगाया हुआ है, उसे सब्जी का पैसा दे देंगे। दिस इज अ रियल रिवोल्यूशन। दो दिस इज हैपनिंग, वी आर नॉट रेडी टू अंडरस्टैंड कि हाउ फास्ट दिस चेंज हैज कम। This all has been driven by we telecom operators. पैसा हमने लगाया,
इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा है और ये फोकट का, ये जितने पे फोन और ये सब है, इसका मजा ले रहे हैं। ये एक्चुअली फोकट का मजा ले रहे हैं। दिस होल इन्वेस्टमेंट, द करियर इज आर्स, वी हैव इन्वेस्टेड, and these all startups and all digital organizations, they are just running on our platform. तो ये जो चेंज आपने देखा है, so अभी हमने जो भी देखा है, ये क्या है? ये ह्यूमन टू ह्यूमन और ह्यूमन टू मशीन इंटरेक्शन. So if that app is a machine and we are human, then what is happening? Human to machine interaction is happening. Now in next 7 years, we are going to see machine to machine interaction. What will happen? Machine to machine, there is a robot, Robotics. there is a app, both will interact. So this change is going to come, and this is just revolutionize the whole world. तो अभी आपको ये भी जो राणा साहब ने बड़ी अच्छी बात कही, ले ऑफ का, आप जब, आपको डरा नहीं रहा हूं, पर आपको सेंसिटाइज कर रहा हूं, आप आज से 5-7 साल के बाद जो फुल टाइम जॉब्स हैं, वो अभी हिंदुस्तान में जितनी है उसकी आधी रह जाएगी. There is someone who is a senior person working with Adani. After taking over this SEC and Ambuja Cement, there was a meeting going on, and Mr. Gautam Adani simply said in that meeting to the CHRO of that organization, "I don't want fixed cost people. Why don't you keep people who are on variable salary? They sell, they earn. They don't sell, they don't earn." He has mandated all his cement factories of SEC and Ambuja should be fully automated. He doesn't want any laborer or labor union and something like that. So you understand what will happen to the job opportunities. Google is laying off people like anything. Twitter on the same path, Facebook on the same path, Amazon on the same path. So see, this is going to be a tough one. But there is a word saying that when the things get tough, the tough gets going. You need to make yourself tough. I'll share one update from Yeah. CIMP, sir. In such turbulent times, we have acquired 3 brilliant faculty members, 2 from IIT Delhi and 1 from IIM Lucknow. He has resigned IIM Lucknow and joined us. So education sector will be one sector which will keep flourishing. That is why I am connected to these people. So if the time will come, I will reach out to them. तो ये बच्चे हंसती अच्छे से है. क्या नाम तुम्हारा? Shalim. Good. So the people who laugh from within, they are normally good people from heart. So They're transparent people, they can share their inner feelings. correct. कुछ लोग हैं जो मुस्कुराते भी ऐसे हैं कि पता लगे कि उनका कुछ पैसा खर्च हो रहा है. तो As the government has started taxing the smiles. तो बच्चों, अभी आज के लिए मेरे ख्याल से इतना ही है. आप कुछ पूछना चाहते हो तो पूछो. मैं एक बार समराइज कर देता हूँ अपनी बातों को. मैंने सबसे पहले आपको बताया कि कॉलेज की डिग्री, आपका लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन, ये सारी ऐसी चीजें हैं जो बहुत मैटर नहीं करती हैं. बियॉन्ड अ टाइम, बियॉन्ड अ पॉइंट. जो चीज मैटर करती है वो ये मैटर करती है कि आप जहाँ काम कर रहे हो उनके कितने काम के हो. दिस इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग. So be confident. I mean, from which background you are coming, which language you are talking, doesn't matter at all. I have shared with you my story from where I have studied and all. Second thing which I have, lesson which I have shared with you, or the precaution which I have told you to take, is make a piece of paper, write down on it at what age you want to see yourself at what level. And if that level is not coming in your present organization, never hesitate for a second to switch off. वो रह गया तो फिर तुम रह जाओ, और वो आगे बढ़ता रहा तो तुम भी आगे बढ़ते जाओ. Third precaution which I have told you to take, never get into your comfort zone. Always take calculated risks. Because
when you are taking a risk, you are trying to do something which others cannot do. Risky thing तो सब नहीं करेगा ना, तो जो रिस्क लेगा वही जीतेगा. कंफर्ट जोन का मैंने बताया स्वीकृति का एग्जांपल देके, लेकिन वो सबके लिए था, इसका बस नाम था. तो कंफर्ट जोन का मैंने बताया कि एक कंफर्ट जोन में इंसान कैसे फंसता है कि भाई मैं लोकल जिस शहर में हूँ वही नौकरी है, 10 लोग मुझे जानते हैं, वो कहता है कि अच्छा उनकी बेटी उनका बेटा उस जगह पे है, कभी किसी का काम आ जाता है जरा करवा दीजिए, तो अच्छा फील होता है उसने मुझे पैरवी की मैंने काम करवा दिया. तो ये सब माया मोह है, ये कभी काम नहीं आएगा क्योंकि वो कंपनी आने वाले समय आपको हटा नहीं वाली है, कहीं भेजने वाली. तो बेटर है कि आप अपने फायदे के को देखते हुए आगे निकल जाओ. और लास्ट जो मैंने आपको बताया कि आने वाला समय is going to be very tough, and what we predict that by 2030 the fixed job, salary job will be half of what it is today. That office concept that you're going to office at 10 a.m. and coming back to Europe by 6 p.m. So that office concept and all will come down to 50% or even lesser. You will be getting an assignment. You are asking something? No. You will be getting an assignment. You are working from home. You are working from anywhere. That is fine. So, knowing all this, the way world is changing, the way the revolutions are happening, you need to keep yourself aligned and updated and equipped with the changes and the requirement which is going to come because of the changes. If you will not upgrade yourself, if you will close your eyes, if you will not accept that these changes are going to happen, I am telling you that these changes are bound to happen. No one can stop this. So better knowing that what is going to happen and foreseeing all those things, if you are equipping yourself so that you can counter those changes when the time will come, then you will come out as a successful professional. Right? So this is all for today from my side. If anything else you want to ask, you can ask. Hanji, Yes, questions? any question from anyone? So, Yes, Shalini, bolo. so as you said, we need to keep adding values in whatever organization we work. So sometimes, like in every organization we have to work in groups, but sometimes whatever we दो तरह के लोग होंगे, एक कैपेबल बॉस होगा और सिक्योर बॉस होगा. वो तुम्हारी क्रेडिट कभी नहीं खाएगा, क्योंकि वो कैपेबल भी है, सॉरी कैपेबल मींस कॉम्पिटेंट, वो कॉम्पिटेंट भी है और एक अच्छा इंसान भी है. So he will never take credit of your work. But if he is an incompetent boss and not a good human, he will try to take your credit because he doesn't have competency that he can think that way. In that situation, give that credit to him and give this credit to him publicly. If this is boss has done. अभी क्या है कि वो कैसा भी इंसान होगा, वो he will have a soft corner for you, but at the same time you should find some medium to go beyond him to make your visibility that this has actually been done by you, but how this will spread, that you will have to factor. Thank you so much. I will supplement here. You can put, when you write all this, sometimes you put it was a great learning experience in the process of doing this. There are your social media platforms also, so you can write, I got a lot of learning opportunities while doing this. तो पता लग गया था किया किसने है, ठीक है. तो थोड़ा सा मतलब guarded words में हो गया, ऐसा नहीं कि मतलब ये लगे कि सब हमने ही कर दिया. तो मतलब you have to have play very. क्रेडिट दीजिए उसको, अपने बॉस को जितना क्रेडिट देगी अपने काम का भी, वो आपको नुकसान नहीं करेगा, वो आपको फायदा करेगा. I am thankful and grateful to my boss for giving me an opportunity to work on such an, special assignment. It gave a lot of learning in the process. Blah, blah. And every step of this assignment,
And on every step of this assignment, he has handholded me and Guided me, guided me, and that is why I have been able to accomplish this project. Something that. You have to be very, very, you know, it should be capsule inside, but it has to be sugar coated. Which type of boss you are? हाँ? Which type of boss you are? भाई देखो अभी अपने बारे में कोई खराब बोल सकता है क्या? मतलब अगर मैं तो ऐसे पहला वाला नहीं, मतलब पहला वाला हूँ कि I feel that I'm a competent and I'm a secured person who always wants to keep pushing my team because I believe कि अगर मेरे नीचे वाला, अगर मान लो मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ, मेरे नीचे वाला जो रिपोर्टी वो GM है, उसको वाइस प्रेसिडेंट बनाएगा तो मुझे तो VP नहीं रखेगा, मुझे तो ऊपर बढ़ाएगा ना। तो इसी तरीके से मैं सोचता हूँ कि नीचे वालों को प्रमोट करो, आप अपने आप प्रमोट हो जाओगे। तो अभी हाँ, लेकिन अगर मान लो मैं ऐसा अगर नहीं भी होता तो तुम कैसे बोलता है तुमको कि मैं ऐसा होता? जैसे आपने कहा कि मैनेजमेंट ट्रेनी जो आते हैं उनको डांट कर फटकार कर उसको परफॉर्मेंस के लिए हम लोग प्रेशराइज करते हैं, क्या आप भी वैसे ही करते थे? मैनेजमेंट ट्रेनिंग से भाई मेरा इंटरेक्शन ऑलमोस्ट नहीं के बराबर होता है, लेकिन उनको डांट फटकार कम मिलती है मैनेजमेंट ट्रेनिंग को। उनको क्योंकि कोई एकदम इनसेंसिटिव ऑर्गेनाइजेशन होगा, उनको ही पता भी कैंपस से आए हैं, अभी इनको हैंड आउट करना है, सिखाना है, तो 6 महीना एक साल तो तुम्हारा हैंड होल्डिंग होगा, डांट फटकार कम मिलेगी, लेकिन हाँ लर्निंग सेशंस वगैरह थोड़े स्ट्रिक्ट होंगे, वो सब होगा किसी अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में। So how to become a charismatic leader so that you lead from the top? बड़ा महत्वपूर्ण सवाल पूछा है तुमने। तो कैरिस्मेटिक लीडर बनने के लिए जो करिश्मा तो लाया नहीं जा सकता, अच्छा लीडर पूछते तुमने फिर होता है। करिश्मा तो ये कुछ ऐसी चीज है कि मुझे लगता है ये गॉड मेड है। और हाँ, अच्छा लीडर बनने के लिए ये है कि आप लीडर कब बन पाते हो? So when people trust you. लीडर अभी जैसे मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन में हूँ, मेरे ही लेवल पे कोई और होगा, रहा होगा पहले या अभी भी है, एक दो काउंटर पार्ट पे है मेरे। तो लीडर और मैनेजर में फर्क ये होता है कि लीडर इज समवन हु इंस्पायर्स पीपल टू वर्क एंड मैनेजर इज समवन हु पुश पीपल टू वर्क। So if you are a leader, your words can inspire people, and they will then, with that inspiration, they will deliver whatever you want. But if you are a manager, you will have to keep pushing, dragging people to deliver. So ये फर्क होता है। तो आप लीडर तब बनते हो जब आप अपने को अपने टीम से कनेक्ट कर पाते हो, ठीक है, जब आपका मिशन आपकी टीम का मिशन बन जाता है। तो नॉर्मली क्या होता है कॉर्पोरेट सेक्टर में, यू डिसाइड अ प्रोजेक्ट, यू डिसाइड अ मिशन, you decide that mission in your cabin or in your conference room, and that get limited to that conference room. People doesn't buy that mission. Why people doesn't buy that mission? Because that mission has been designed by a manager who has not been able to communicate and let people understand what is in it for them. But a leader, when a leader decides for a mission, he ensures and he gives maximum time so that people should buy that mission, because once your entire team will buy, things will get delivered. तो लीडर का काम वही है कि एक अच्छा लीडर जो होता है उस टीम से कनेक्ट करता है, वो किस तरीके से उस चीज को खरीदेंगे। उसने एक मिशन बनाया, मान लो मैंने एक मिशन बनाया कि मुझे इंडिया में अगले 1 साल में 10 करोड़ कस्टमर जोड़ने, ये मेरा मिशन है। तो अब एक जो मैनेजर होगा वो 10 करोड़ का टारगेट ब्रेकअप कर देगा, सर्कल वाइज, रीजन वाइज, और सबको दे देगा, बोलेगा करोगे तो ये इंसेंटिव दे मिलेगा, ये बोनस मिलेगा, नहीं करोगे निकाल देगा। पर एक लीडर बताएगा कि ये 10 करोड़ आ गए तो हम कैसे टर्न अराउंड कर देंगे चीजों को, हम कैसे वोडाफोन, एयरटेल और जियो से आगे निकल जाएगा, कैसे हम अपना सर उठा के चल पाएंगे। आज जो लोग बोल रहे हैं कि ये कंपनी बंद हो जाएगी, वो लोग कैसे हमारे पीछे घूमेंगे। वो उस चीज को, उस 10 करोड़ को कनेक्ट कर देगा अपने हर टीम मेंबर के रिस्पेक्ट और सेल्फ एस्टीम से। और जब वो 10 करोड़ कनेक्ट हो जाएगा उस टीम के सेल्फ रिस्पेक्ट और एस्टीम से, फिर वो जान लगा के काम करेगा। ठीक है? Yes, anyone else? Vote of questions is over.
So Thank you good. so Thank for you. enlightening us with your knowledge and experience.